पकड़ा दो चलो Hi everyone, so we are here at Musashi Tsukaichi station and today we are about to go to Akigawa Valley. It's like very close to Tokyo and it's beautiful valley and you can have the experience of mountains if you want to go nearby Tokyo, and it's a beautiful day, little cloudy, looks like it's about to rain but we are excited. This is the bus stop here. So till Musashi Tsukaichi you can get the train. After that you have to go by a bus, and here comes the bus. So we'll hop on the bus and see you at the valley. For us to reach to our destination, and you can see this is interior of the buses here in Tokyo. Mostly you'll find some lower seats and some upper sitting, and you can sit wherever you want, but there are some priority seats which you should consider. This is the station. I am hungry, so I'm about to eat this delicacy. I found it in the combini today. Yeah, it's delicious. 入口のお知らせなければお願いいたします。This is the rear gate from where the people enters. Touch your card, or you can take a token for paying the bill, the fare. It's quite peaceful today, a bit cloudy, but I'm looking forward to the
As we move along our journey, more and more mountains could be seen. Here you see 特段お知らせなければ and 通過いた look し at ま the す。 charges from which point you started to the end of your destination, and you can pay accordingly in this machine. If you ever find it difficult to pay in buses, you can ask the driver, he or she will help you. And I'm about to eat again. This is called onigiri. It's local like snack in Japan. It's made up of rice and nori, which is a seaweed, and side is a filling. You can have different kind of onigiris in Japan. Beautiful lush green trees are coming on, and I can already see the view, the valley behind me. So excited! Yay! Good views, good views. I can see people traveling by. Traveling with us are mostly the same. I think most of them are going to the same destination. So you see, the people just paid the bill, the fare, and it's easy. If you have a card, it's very convenient. So try to have a Manaka or Pasmo card. Especially if you are in Tokyo, Pasmo or Suica will work. お疲れください。 If you want more information on how to buy a ticket or how to travel inside a bus, especially or a train, we can make another video on that. Comment down below so that I can know who all are interested. Now we are crossing a bridge. 右に曲がります。ご注意ください。右に曲がります。 Along this way I can see so many places where I wanted to stop, but there are some designated bus stops, so I don't think we can travel to those unless we have まも our なく car. 没花の里 But で we す。 can 扉が開くまでそのままで actually 待ちく just ださい。 enjoy the views from inside the bus. And if you want, you can stop at some previous stations and then walk a bit. And I think nobody really hates walking in such beautiful environment. In fact, I love it. Every time the bus stops, I want to get out. I just want to enjoy this view. But I'm just going forward and to our destination, which should be the best, I think. It's very small space here, so like any other mountainous road, mountainous terrain, we have to be very careful. Now we are on a steep slope. This is another river here, and I can already see people enjoying in the water. So beautiful. I wish I could take a picture here. No worries, I'm happy that you all can see it with me. We have arrived. What is this? Looks like a restaurant or souvenir shop. Okay, let us find out. This is the bus that we hopped on. It's going to take another passengers now. Okay, so it says Akigawa Keikoku Seto no Yu Spa. Oh, this is spa. Okay, so like in this beautiful meadow of valley, and you can find a spa. What else do you need? And by the way, let me tell you, Japanese spas and onsens are world famous.
because of their hospitality and because of the natural water, natural hot springs. So you can try it if you are in Japan. And this is one such spa which you can find amidst the green, lush green mountains. And definitely you can find such kind of local stores and local shops where you can have some souvenirs and you can enjoy the local cuisines. So now we are finding a spot to sit because we are little hungry. We didn't do breakfast today because it takes around 2 hours from our home and we didn't want it to waste our time. This is me wearing a sari today. I know who wears sari to the mountains. Well, it's not my choice. I do. I love it. Besides, I wanted some good photos today. So I'll ask my husband to take some. So we started chatting, enjoying the view, and enjoying this beautiful partner that I have. Now he is arranging for the photography and videography. We are about to film. We are about to start. Finally, I'm so happy. Some good photos in my sari. He's telling me what all you can see here, and we are just planning to go. Where are you going? Okay, I'm waiting. क्या कर रहे हो? I don't know what he's doing. Is there anything to see? Should I come up? Okay then. Let's go. You can find bus stop, you can find a bridge, you can find a spa here, and you should be aware of bears in this area. बहुत भालू हैं जापान में. ऐसे सिंबल्स हर जगह मिल जाएंगे, स्पेशली माउंटेनियस एरिया में. कई बार ट्रेन डिले हो जाती है भालू की वजह से. How beautiful. Let's go to the bridge, the famous Akigawa bridge. यहाँ ये डाइनिंग एरिया है, स्पा है, और अब हम जहाँ जा रहे हैं, इट्स द फेमस ब्रिज. मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, पर वहाँ बहुत सुंदर झरना है नीचे, और होपफुली हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं. ये पगडंडी बड़ा रास्ता है, पहाड़ों में कट कर रखा है. यहाँ पे जहाँ पे भी पहाड़ होंगे वहाँ पे ऐसा कहीं ना कहीं पगडंडी सा रास्ता बना के ऊपर की तरफ एक रेस्टोरेंट बना देंगे, और वहीं पे हॉट बाथ होगा, नेचुरल स्प्रिंग सा. वो नेचुरल है तो अच्छा भी लगता है, शांति है, जंगल सा एरिया है, इसलिए यहाँ पे ऐसे भालू वाले साइन भी हैं. यहाँ पे नीचे जाने का कहीं रास्ता भी है. ये रास्ते अलग अलग जाके मिलते रहते हैं सड़कों पे, जहाँ पे जो लोग दिखाई दें वहीं पे चले ज़्यादा. पाइन ट्री या बर्च ट्री, जैसा भी सिल्वर
का। आराम से संभल के चलना। मुझे नहीं पता मेरा साड़ी पहनने का डिसीजन कितना ठीक था, बट फोटोज अच्छे आने वाले हैं। फोटो जैसे कि रास्ता देख रहे होंगे, पेड़ों के रूट्स जो हैं वो पूरे फैले हुए हैं यहाँ पे। हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं झरने की आवाज़ तेज़ होती जा रही है। उधर पानी है, ये थोड़ा झरने का एरिया सूखा सा है। यहाँ पे चलते चलते ब्रिज आएगा यहाँ का पॉपुलर, आकीगावा वैली जिसे बोलते हैं। आकीगावा वैली का बहुत ही पॉपुलर ब्रिज है। वहाँ पे बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आती हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे बच्चे बूढ़े अपनी फैमिली के साथ आते हैं। जापान में पहाड़ बहुत हैं तो इनको आदत है चलने की। ये लोग बहुत बहुत चलते हैं, कई कई किलोमीटर, और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते ऊबड़ खाबड़ से। यहाँ पे आपको आराम से 60 से 80 साल तक के लोग सब हाइकिंग करते हुए दिख जाएंगे ऐसी जगह। इवन मोर देन 80 साल के ऊपर से के भी हॉबी है यहाँ की। जापान एक पहाड़ी कंट्री है। टेक्नोलॉजी है उसकी सिटीज़ में, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। बाकी अगर वहाँ से अगर कहीं भी दूर जाओगे तो आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी और ऐसा पहाड़ी इलाका ही मिलेगा। हम आ गए ब्रिज के पास। ये ब्रिज के पास अब The bridge, हम आ चुके हैं। the beautiful red bridge. ये इशिबुने बाशी। ये इशिबुने बाशी, ये रहा ब्रिज। हम आए हैं इस रास्ते से और ये दूसरा रास्ता है जो एक बीच में पड़ा था, और अब ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। और ये मेरी तितली है जो साड़ी पहन के घूम रही है। अब पानी की आवाज़ तेज़ हो रही होंगी। यहाँ पे भाप तेज़ है, इतना भी तेज़ नहीं है। और आप देख सकते हैं ये आ रही वो रिवर, आकीगावा रिवर है, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बहाव है। बहुत बढ़िया है। और वहाँ पे आपको आगे दिख रहा होगा एक फैमिली है जो पूरा मज़े ले रही है पानी का। उसके लिए अलग से रास्ता है, उसके लिए बहुत थोड़ा डेंजरस रास्ता है। ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और ये कूदने वाला है ऊपर से। इसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली और अभी 2 लोग आ चुके हैं, दोनों में कंपटीशन होने वाला है। और ये एक से बढ़कर एक प्रदर्शन करते हुए, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। और हम लोगों को कितना मज़ा आ रहा है। और हमें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारा इस ब्रिज पे आगे खड़े होकर मनोरंजन हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी जहाँ पे बोटिंग करते हैं लोग और पहाड़ों के बीच में से निकल के जाते हैं, ख़ास करके धुआंधार वैली जो हो गई मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लोग ऐसी पहाड़ों के ऊपर से कूदते हैं।
और ये पूरा पूरा बना रहे, और ये पानी इतना गहरा भी नहीं है, इससे पता चलता है। हमारे जैसों के लिए तो स्कैरी है ना। या जिन्हें तैरना नहीं यहाँ आता, सबको तैरना आता है। जिन्हें तैरना नहीं आता है वो यहाँ कृपया छोटे-छोटे बच्चे तैरते कोशिश हैं। ना करें। और ये गया दूसरा बंदा, और ये कूदा। तुम्हारा मन कर रहा है ना जाने का? मैं तो बहुत मन कर रहा है, पर तुम ना जाओ। नहीं जा रहे। So serene, so beautiful. Meet my new outfit. This is a part of my outfit now. Yeah, it looks so nice. हम यहाँ थे कुछ देर पहले. It's so beautiful, right? Lush green trees, mighty mountains. और अभी तो समर सीजन है, but when it's autumn here, all the trees are like very vibrant and colorful, and it's so beautiful in autumn here. Undoubtedly beautiful. I wish this home was mine. I mean, every time I look at these houses, I want it. I hope one day. Who knows? Hi. Yeah, so we're about to head to home. Now waiting for the bus. Still enjoying. So, it's such a nice view here. हमने बहुत सारी फोटोज़ खींची हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है. आई होप यू विल लाइक इट. और अब हम जा रहे हैं घर. बारिश सी आ रही है यहाँ पे, बूंदे क्योंकि यहाँ बरसने लग रही बारिश हो है। सकती है. विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वन. बाय. बाय।